these two judgments in particular. So my submission will be that what had happened in the context of this election of the 8th of February 2024 was a constitutional deviation. Sir, mujhe arz karne. It is not the scope of your application. Sir, it is. No, it is not. The judgment is before this court under review. Sir, I'm supporting that judgment. That you are Yes, supporting. yes. You may support. हमने नहीं कहा कि जी, आप जी। क्या करें उससे. लेकिन that starts with the fact that the SIC. Sir, मुझे अर्ज करने. वहाँ से आगे चले. Sir, नहीं That sir, is- ये sir एक लम्हा ये कागज देख लीजिए. I've created a one pager with the relevant आपने दे facts. दिया, हम देख लेंगे. Sir, मुझे अर्ज करने दें sir. Kindly sir, if I've been given an opportunity to submit, allow me to run through these facts. This is order dated, and in the meanwhile, while this was happening with the Supreme Court appeal, order dated 2/2/2024, passed by the Election Commission of Pakistan in Salman Akram Raja's case, refused to accept as PTI candidate despite ticket. See, this order was read before your lordships. They passed a detailed order saying we will not recognize any person, even if they have filed tickets, to be a PTI candidate. Number 8. PTI returned candidates were considered independent by the ECP on 8/2/2024 and thereafter. Now this is cutting. The returned candidates had to join a political party within 3 days, as per Article 51 of the Constitution. 80 returned MNAs joined SIC. They were on the list of PTI candidates previously published by the PTI. Each one of them was on the lists that we had published. These are our candidates before the election. BAP party precedent was available with respect to the 2018 election. The BAP party had not contested. No list of reserved seat candidates were filed. Reserved seats were given to BAP party on the strength of independents who had joined it after the election. So we had a clear precedent in front of us that the ECP had previously interpreted Article 51 of the Constitution, the relevant sections of the Election Act, and the rules to say that these are directory provisions. Ultimately, the will of the people has to be given effect. So if independents have joined a party which was not otherwise in Parliament, they will nevertheless be considered to be a parliamentary party and they will be allotted reserved seats. So that was the reason for us joining SIC, because there was a clear precedent of the previous election. And it is established law laid down by your lordships that every person is entitled to rely on the precedent of a regulatory body, the Election Commission being a high constitutional body, if it has interpreted. Fine. लेकिन आप सिचुएशन को देखिए, हमारे पास एक प्रेसिडेंट था, उस प्रेसिडेंट पे Before joining, whether any due diligence was made by you or not. सर हमने देखा कि बाप की एक प्रेसिडेंट है. सर देखिए होता ये है. Article 51 of the सर हमने उसको पढ़ा. Constitution. उस वक्त तक तो आर्टिकल 51. You are all the legal Sir, brains sir. and legal acumen having. सर हम बैठे, हामिद खान साहब अभी इधर बैठे थे, इनके दफ्तर में मीटिंग हुई, हमने सब ये बातें किया. देखिए एक पार्टी के पास क्या चॉइसेस थी, हमारे पास 5 चॉइसेस थी. सिर्फ हमने फर्दन किया. क्या हम PML-Q ज्वाइन कर सकते थे, क्या हम PML-N ज्वाइन कर सकते थे, क्या हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, क्या हम JUI ज्वाइन कर सकते थे. उसके बाद 2 पार्टियां सिर्फ बच गई थी जो पार्लियामेंट में थी, या जिनके बारे में बल्कि एक थी MWM. उस वक्त हमारे कुछ मामला नहीं, 6 लोग थे उनके. सर PTI को तो रिकॉग्नाइज नहीं ना कर रहे थे. सर मुझे अर्ज कर देते हैं इशू ये नहीं, PTI तो ज्वाइन ही नहीं करनी थी हमने. PTI तो हम थे. We did not have to join PTI. मतलब एक और पार्टी का भी शायद प्रेस पे और उस पे आता रहा कि फर्स्ट कोई और नहीं सर, वो देखिए अब होता ये है. अदतुल मुस्लिमीन के लिए सर so this was a political decision. PTI का कोई कैंडिडेट उन्होंने नोटिफाई किया था जो माय ब्रदर्स आर आस्किंग यू दैट 6 लोग थे PTI के, वो उनको भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया. Everybody was declared at the time of notification whether they were declared PTI candidate. Nobody was declared PTI. उनका है नोटिफिकेशन. जी मैं भी कर दूंगा, गौर साहब आएंगे. So everybody was declared independent. अगर तो वो PTI हो गए होते तो कोई इशू ही ना होता. हम कहते here is PTI in Parliament as a political party. हमें रिजर्व सीट्स थे, लिस्टें तो हमने फाइल कर दी थी 22 दिसंबर 2023 से पहले, या 22 दिसंबर को जो भी हमारी डेट थी कट ऑफ. So we had filed as PTI lists for the candidates of reserved seats for women and non-Muslims. That was not an issue. अगर इन्होंने हमें 8 फरवरी के बाद इन 6 लोगों को भी PTI डिक्लेयर कर दिया होता तो there would have been no issue at all. इन्होंने किसी को PTI डिक्लेयर नहीं किया. Everybody, all 86 were declared. सारी बातें ठीक. सर मुझे अर्ज कर लेते. मुझे देखिए यहाँ डिफरेंस ये है कि एक प्रोसीडिंग जो स्टार्ट हुई SIC से
सर, मुझे करने 185(3) देखिए ना उसी स्कोप पे मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात। 185(3) सर मैं सब पे आऊंगा, और यू वाज नॉट ए पार्टी। मैं सब पे आऊंगा, इन और सब बातों पे आऊंगा 187 के स्कोप पे सर, मैं जो सब बातों पे वो आऊंगा आपने सर। रेस्ट एश्योर्ड वी आर हियरिंग ए सर, रेस्ट एश्योर्ड मैं उसी तरफ all आने these यस सर questions सर have मैं इसीलिए उधर आ रहा हूँ, एक लम्हा मुझे दीजिए। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू दिस। ये जो मैंने सिनारियो आपके सामने पेश किया है वो यही है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन